Hello, my cute minions. How are you all? Take a thonda here, but anyway. Uh, so today we will discuss about the MCQ of daffodils. You know, the topic has been discussed. If you haven't checked it out, then go and देखिए आसो. Okay, पर देखिले ही तुमको MCQ भलरे बुझा पड़े. एटारे तो बहुत MCQs अच्छी, but important 20 टा. Okay. Almost 20 MCQs I may be discuss करिए 20 to 25 or maybe 30 maybe. Okay. I hope so. I hope समझो एटा easy लगे easy poem easy easy क्वेश्चन भी धरिक आछे बट तुमको गोटे जिनस कर अछि पिले जहार जति की क्वेश्चन ठीक होची कोन करियो सब लिखिक रखियो गोटे ठीक हला एक लास्ट टू जदि हमें 20 क्वेश्चन कि 25 क्वेश्चन जहाँ भी कले तुम्हें करियो जे मोर 18/25 कि 18/20 कौन करे प्ले रे कमेंट रे लिखियो. ऑलराइट कमेंट रे लिखियो एतिकी बस. आ जे तुमको लागले टिके स्लो पढौची कोन करियो 1.5x लिखि दो हैला. चलो प्ले डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. हु वाज द पोएम Daffodils written by के लिखछन दे पिले हेर तो आखी बुझी तमे कहि दो. एट्स वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो और फ्रॉस्ट के लिखछन दे पिले ऊपर इन लिखाई छी वर्ड्सवर्थ. एडा मो क्वेश्चन पचरे भी मूर्खामी हेरा विलियम वर्ड्सवर्थ छिन हमरा आंसर. ओके स्टिल देखि जे पिले 2 नंबर क्वेश्चन. Okay, 2 number question कौन कोची. What according to the poet is a spontaneous overflow of powerful feelings? Nature, flowers, clouds, poetry. कोड़ा पिले poet का हिसाब रे बा वर्ड्सवर्थ का हिसाब रे what is a spontaneous overflow of powerful feelings पिले. yes पूरा easy. जो माने भी इंग्लिश रेट तुम पढ़ा होची माने चाहिबो फ्यूचर रे तमे देखि पारे पिले एटा सबुठ इंपोर्टेंट रोमांटिक एरा रो कोन बहुत पॉपुलर लाइन एटा मे बी पूरा ब्रिटिश हिस्ट्री सब पॉपुलर लाइन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइंस भितरे. ओके कोन पिले पोएट्री सब जान छ ना तांको हिसाब रे पिले पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. ता आंसर कोन हो पिले पोएट्री. 2 नंबर आंसर जी डी देछि से ठीक है ना. 3 नंबर क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएम डैफोडिल्स इनकॉर्पोरेट आइडियाज एंड एस्पेक्ट्स एसेंशियल टू सॉनेट्स. अच्छा एटर तो क्वेश्चन रही होछि ठीक नै कि ओडी छोटो करदा टिके छोटो करदा देखा जाउन तो आंसर देखो एबे. ओके 3 नंबर कोन होछि. What does the poem Daffodils incorporate? Ideas and aspects essential to sonnets, ideas and aspects essential to ballads, ideas and aspects essential to epics, ideas and aspects essential to romantic poetry. तमे जदि पढि नथिबी मु एबे कहली आई होप सेट भी तुम धरि गेट आंसर दे पारि. बहुत इजी हेगा पूरा. फर्स्ट तमरो पोएम स्टार्ट हा पूर्व ही पिले एडे लेखाई अछि है ना. से लाइन डा अछि से लाइन सहित एटा भी अछि के कहबो. obviously ideas and aspects essential to romantic poetry है ना. romantic poetry भी तापर होछि हमरा 4 नंबर क्वेश्चन. which of the following is not a natural image? natural image कोडा नाही पिले. cloud, tree, star, couch कोडा पिले नेचुरल इमेज नाही. एटा भी इजी क्वेश्चन यार बेसी भाबन. couch राइट. 5 नंबर. what does the use of nature in the poem daffodils create पिले. what does the use of nature रे माने आई मीन ए पोएम रे नेचर रे कोन यूज अछि पिले बा केमिदि क्रिएट होछि. a joyful setting, a religious setting, a sorrowful setting, a spiritual setting. कोन केमिदि यार अछि.
देखो बहुत स्कूल रे पिले ओडिया रे बुझा जायनी मु ओडिया रे इथबे बुझौची जे बहुत पिला यूट्यूब रे देखाउची वीडियो बहुत पिला एमिति अछन जो मानको ओडिया आई मीन इंग्लिश टू इंग्लिश कहले बुझा पड़े सेथि मु ओडिया रे बुझौची सो एडार फायदा उठाओ जो मानको इंग्लिश भल रे आसुनी आ भल रे आंसर दियो आ भल रे पढो ओके कोन हबो को आंसर a joyful setting okay 5 रे भी आंसर ए हबो a joyful setting 6 नंबर कोन कहूची व्हाट डज द पोएट ग्लोरीफाई इन द पोएम डैफोडिल्स कोन को जिंसो से ग्लोरीफाई करूथिले पिले डैफोडिल्स रे the beauty of nature the bliss of solitude both of these neither of these कोन पिले नेचर रो ब्यूटी को से ग्लोरीफाई करथिले ना ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड को ग्लोरीफाई करथिले ना दीडजा करथिले ना कोडा भी करनथिले इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसबर हाई पॉसिबिलिटीज कौन आंसर सी बोथ ऑफ दिस पिले दीडजा जिंसो से ग्लोरीफाई करथिले द ब्यूटी ऑफ नेचर करथिले द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड को भी करथिले ठीक अछि पेज नंबर 1 हमर सल्ला पेज नंबर 2 रे बे आसिया कोन व्हाट इज द पोएट्स वंडरिंग कंपेयर्ड टू से जो वंडर करथिले कुडिया एमलेसली चालुथिले से जिंसो कहा से कंपेयर कराइछि क्लाउड सहित वेव सहित ब्रिज सहित और स्टार सहित कहा से कंपेयर कराइछि बिले को जो एमलेसली चालुथिले कहा से कंपेयर कराइछि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड राइट आंसर कोन बिले क्लाउड 7 नंबर रो आंसर ए हो ना क्लाउड Which figure of speech is used in the line I wander lonely as a cloud? को पहले figure of speech or literary device को literary device or figure of speech एठी यूज हेछि okay I wandered lonely as a cloud को एटर गोटे कैच करियर अछि पिले कोन होई परियो लाइन रे जदी एठी अछि पिले तुम जान दलो कंपेयर कराउची कास तो I कास द क्लाउड हाउ यूज कोन होइछि बिले एज जदी एज किंबा लाइक एज किंबा लाइक भली वर्ड यूज होउछि आ कंपेयर कराउछि ताल सेटा कोन हमें कहउचे सिमिली हो ना सिमिली जदी एज और लाइक न यूज हे कंपेयर कराउछि ताल हमें कोन यूज करछि सेटे मेटाफर हो ना मन रखि जा बहुत इंपोर्टेंट इजी तास इंपोर्टेंट भी तो आंसर एटा कोन हबो पिले एज जदी लागि छि ताहाल सेटा कोन हबो सिमिली तो एटा आंसर कोन हबो सिमिली ओके व्हाट डज अ होस्ट ऑफ मीन होस्ट ऑफ माने कोन पिले a large number of a small number of only one of few कौन हवा a host of daffodils बहुत गुडी daffodils राइट तो आंसर कौन आखि बुझी की a large number of राइट आंसर कौन पिले ए नर ए होचे large number of host of मीनिंग होचे large number of 10 नंबर व्हाट कलर आर द daffodils प्ले daffodils कलर कौन थिला की कहियो कौन थिला पर्पल थिला पिंक थिला येलो थिला रेड थिला आखि बुझी की जदी मो क्लास भी की अटेंड करछ पूरा फर्स्ट स्लाइड रे ही मु बने देइथिली कोन फोटो तार ऐड करथिली कोन थिला से फोटो रे येलो कलर थिला राइट कोन थिला पिले येलो कलर थिला सो आंसर कोन हबो आखि बुझी की येलो सी तबे को 10 रो कार केतरा ठीक हला पिले कहथला देखि 10 रो कार 10 रो 10 टा ठीक हला जो माने भी 10 रो 10 टा ठीक हला गुड 9 टा भी ठीक हला गुड बट 9 जदी कम ठीक करछ तले नॉट गुड ते पाठ पढना कारण एते इजी इजी जिंस थरे जदी पढी चले एही जेया कथा जदी हेइनी ता मान तम पढना किछ असुविधा नहीं भला पढना नो प्रॉब्लम टाइम अछि प्रैक्टिस करो यदि प्रैक्टिस करना ताले प्रॉब्लम हैला
11 नंबर क्वेश्चन कौन व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स पिले हमर पोएट हमर के वर्ड्सवर्थ कोठे डैफोडिल्स देखथिले पिले बिसाइड द लेक अंडर द ट्रीज बोथ ऑफ दिस नीदर ऑफ दिस को हमर पोएट डैफोडिल्स कोड देखथिले पिले भाव बिसाइड द लेक देखथिले अंडर द ट्रीज भी देखथिले लीड जा हो ना तो हमर आंसर कोन सी बोथ ऑफ दिस हो 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज फ्लटरिंग मीन तो पिले फ्लटरिंग रो माने कोन फ्लटरिंग एंड डांसिंग माने छना लाइन को मूविंग टू एंड फ्रो मूविंग अप एंड डाउन मूविंग एट अ स्लो पेस मूविंग एट अ फास्ट पेस एटा मन रख तो FAST और FIRST रो भितरे पिले हाउ टू प्रोनाउंस लाइक केमिति डिफरेंस जानियो फर्स्ट FIRST फ हबो फास्ट बोले फेस्ट ओके फ आ फा जो मीम नहीं फा बोल छड़ा FAST यस फ्लटरिंग नो माने होची पिले मूविंग टू एंड फ्रो है ना एटा भी तमरा कोन ग्लोसरी रे अछि तुम देखि नथियो 13 नंबर व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स पिले हमर पोएट डैफोडिल्स को केतेले देखिले while wandering lonely एकुडिया माने कोन एमलेसली चलला टाइम रे while lying on his couch तांगो आर्म चेयर रे कोन सोइला टाइम रे रेस्ट ना टाइम रे while looking at the stars ना पिले तारा देखला टाइम रे while looking at the waves लहड़ी देखिया टाइम रे केतेले देखले पिले को आगो तमे आंसर बाबो तापरे मु आंसर देबी ए while wandering lonely जेतले एकुडिया से एमलेसली बिना लक्ष्य रे चालुथिले सेतेले से देखले ओके पेज नंबर 2 सरला 3 What does the poet compare the daffodils with पिले What does the poet compare the daffodils with ओके तो हमारा पोएट वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को कहा से कंपेयर करथिले स्टार सहित वेव सहित क्लाउड सहित व्हेल सहित को गुड गुड स्टार सहित स्टार जेमिति कोन पूरा नेवर एंडिंग लाइन रे पूरा लंबी छंदी से भली डैफोडिल्स भी लंबी छंदी से हिसाब रे से कंपेयर करछ मने अछि ना 14 नंबर रा आंसर ए नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट रिजेम्बलेंस डज द पोएट फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स अरे यार मु एबे कहि दे आंसर एबे कहि दिली हां ना तो डैफोडिल्स जो हमरो स्टार भीतर जो कंपैरिजन डा कराई छि पिले को जिंस को माने कोन तांगु लागिला जे हां ए दिटा भीतरे तांगरो माने टिके मेळ खाउची सेथे हमें कंपेयर करि परा को जिंस देयर कंटीन्यूअस स्ट्रेच एबे ही आंसर कहि दिली बी देयर कंटीन्यूअस स्ट्रेच दि जन जा कोन लंबी छंदी बिना एंडिंग लाइन रे समान लंबी छंदी बोली 16 नंबर देखो पिले व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर मिल्की वे को आउडे कोन वे गुड वर्ड हम यूज करे देखो एट देखो गैलेक्सी स्टार बे और ट्विंकल को आखि बुझिले छोटो पिलर हम सुन आछे हम को गैलेक्सी रे अछि मिल्की वे गैलेक्सी तो आंसर भी कोन होबा गैलेक्सी अछि बे एडा भी के भूल करिनि मोरो आशा अछि एति कॉन्फिडेंस हम ऊपर अछि मोरो नो प्रॉब्लम What does the margin of the bay refer to पिले the margin of the bay रो माने कोन the border of the lake the bank of a river a water body connected to a sea waves in a lake or sea margin of the bay पिले को जल्दी 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 the border of the lake को the margin of the bay it quite
8 number. They stretched in never ending line. What figure of speech is used here? They stretched in never ending line pile. Simile, personification, hyperbole or metaphor. जल्दी 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 जल्दी. Hyperbole. Hyperbole रो माने कौन जान ना पिले? Exaggeration. Exaggeration पिले. Exaggeration. माने अच्छी ना? Exaggeration माने गोटे छोटो जिनिस को बड़ बढ़ाई चढ़ाई कहया. Daffodils को सेमिति से करथिला जे पूरा माने एते जे म देखाउनी होना ने माने पूरा मु जुआड देखुची से आडेगा जिनि समुद्र पाखरे ठियाले समुद्र सबआडे देखाउची से बेले म देखाउतले एते हे ना नथिला राइट बट से जिनिस टिके बढ़े चढ़े कहथिले सेटा को हमें एक्सैजरेशन कहबा और लिटरेरी डिवाइस बा फिगर ऑफ स्पीच हिसाब रे हमें कोनटा कहया हाइपरबोल और हाइपरबोली ओके next 10,000 saw I at a glance which figure of speech is used here 10,000 saw I at a glance एटा भी देखो को simile metaphor hyperbole personification ये चारटा समस्या जाना था दरकार पिले simile metaphor कह देली hyperbole माने कह देली personification माने सुना पिले आउथर कहूची बार बार मु क्लास रे कहूची स्टिल आउथर कहूची जो भी जिनिस अच्छे निर्जीव हो किंबा जीव जंतु हो ओके अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन जदि अच्छी पिले आउ से जिनिस को जदि आमे ह्यूमन रा एट्रिब्यूशन ह्यूमन रा गुण देबा ताले सेटा को आमे पर्सनिफिकेशन कहबा जेमिति कि एग्जांपल कहबी इट कोन स्क्रीन डा मते कहूची ये केबे कथा कहनी मनिष कथा कह मते गोटे मनिष ही कथा कहि पारे गोटे पशु कथा कहि पारियनी गोटे पक्षी कथा कहि पारियनी गोटे बोर्ड कथा कहि पारियनी जदि मु लिखिची मोर कोन कोनोसी बुक रे जे स्क्रीन मते कथा कहूची ता माने सेटा कोन सेटा होची पर्सनिफिकेशन मु मनिष रो गुण एटा को देली ए स्क्रीन डा को देली ओके आई होप बुझा पड़थियो ओके तो 10,000 saw at a glance पिले गोटे तरह से गणी पारिए कि ना सेटा कोन बढ़ई चढ़ी खुआई ता माने कोन हाइपरबोल एक्सैजरेट करिया बा एक्सैजरेशन यूज करिया व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वाज द डांस ऑफ द डैफोडिल्स लाइक को पिले जो डैफोडिल्स डांस करथिले सेटा को टाइप रे थिला इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म फुल ऑफ एक्टिविटी एंड विगोर ऑल ऑफ दिस पढ़ले तुम तो लगे सब थिला ओबियसली तुम डायरेक्ट कौन ए जिनस पोम नथिला स्टिल तुम जब पढ़ी थी वाले तुम जानि पारे जे ऑल ऑफ दिस आंसर हबो ओके ऑल ऑफ दिस आंसर हबो ऑल ऑफ दिस है पेज नंबर नेक्स्ट इबा 21 क्वेश्चंस पिले क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज टॉसिंग मीन moving here and there, moving side to side, swaying to and fro, swaying at a fast pace. Tossing रा meaning कौन? को moving side to side को हमें tossing कहया पहले side to side को हमें move करिया को हमें tossing कहया tossing जा tossing नहीं tossing है tossing ओके आंसर देखते लगी हाउ मेनी फ्लावर्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस गोटे कोन चाहणी रे केतेटा डैफोडिल्स देखथिले 100 100टा 1000 1000टा 5000 5000टा ना 10000 10000टा केतेटा पिले गोटे थरे केतेटा देखथिले आंसर होची 10,000 10,000 टा गोट थरे से देखथिले हला डायरेक्ट क्वेश्चन थिला व्हाट डज 10,000 इंप्लाई इन द लाइन 10,000 saw I at a glance exactly 10,000 about 10,000 a very large number of none of this ये लिखाई छि प्ले हमर जो कोन हाइपरबोल यूज करी कराई छि तार माने कोन a very large number बहुत गुड नंबर ठीक अच्छे गणी बंद से गोटे कौन एप्रोक्सीमेशन
यूज करी कहले 10,000 टा गोटे चाहणी रे देखिले व्हाट डज एट ए ग्लांस मीन पहले एट ए ग्लांस मान कोन immediately upon looking at something repeatedly, looking at something fixedly or looking at something for the first time कोन yes immediately upon looking right हठात देखियो गोटे टाइम रे पिले केतरा आसला चाहणी रे the waves beside them danced what does them refer to here पिले एटे them कोन waves beside them danced एटे पिले them कहा को दर्शई छी जो लाइन रे थिला the waves beside them danced एटे them ना कहा को दर्शौ छी the stars the clouds the daffodils the whales को बस बस कह दियो 25 नंबर तीर शारदा तुम बोर थी द डैफोडिल्स को से दे मेली दर्शाउछन राइट आ गोटे करदा आ गोटे ओके आ गोटे करदा तापरे दिबा जो तुम दरकार थिल त मते को एती क्वेश्चन आ 25 टा आ 26 टा करदा हला इन केस हम दरकार ले व्हाट मेड द वेव्स स्पार्कलिंग बिले वेव्स को स्पार्कलिंग के करेला the bright sunlight the clouds in the sky the moonlight night the blowing of the breeze कोड स्पार्कलिंग कला पिले आंसर होची the bright sunlight कोन वेव्स को स्पार्कलिंग कला ओके ठीक अछि आज पे एति थाओ जे तुमको ए टाइप आउट दरकार डू लेट मी नो आर इन सेकंड पार्ट दरकार डू लेट मी नो आई विल ब्रिंग दैट टू यू ओके मु नेक्स्ट वीडियो रे आर सेकंड पार्ट आन दे तुम दरकार मते कहिबो ठीक अच्छे आज बाय बाय क्यूट मिनियन सी यू सून टाटा बाय